गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुच्ची मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा फिजिकल फैक्टर जोटा कि आमर कोर पेपर 2 रे अच्छी यूनिट 1 रे आउ फिजिकल फैक्टर बहुत गुड़ाक फैक्टर अच्छे किंतु जेहेतु आम सिलेबस अनुसार केवल टेम्परेचर एवं आमर लाइट अच्छी तेणु आम टेम्परेचर आ लाइट उपर ही फोकस करवा। तो क्लास स्टार्ट करवा पूर्व समस्त अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो पसंद थे निश्चय लाइक कर एवं शेयर मध्य करिवो। तो देख तो फास्ट आम देखा कौन देती आन अबायोटिक फैक्टर is a non-living part of an ecosystem that shapes its environment. In a terrestrial ecosystem, examples might include temperature, light, and water. तो बेसिकाली आबायोटिक फैक्टर कौन आम जानी दुई प्रकार फैक्टर अच्छी गोटे अच्छी बायोटिक आ गोटे आबायोटिक। तो आबायोटिक फैक्टर माने कौन जोटा कि नॉन लिविंग पार्ट ठीक अच्छे। तो जमती कि तुम मिनेराल्स हो वाटर हो लाइट हो टेम्परेचर हो कार्बन डाइऑक्साइड हो एगुड़ा सब आबायोटिक फैक्टर जीव ठीक अच्छे। तो यहाँ हूँ गोटे इकोसिस्टम पार्ट। तो एथरे से एग्जांपल दे देला टेम्परेचर लाइट एंड वाटर इन ए मेराइन इकोसिस्टम एबायोटिक फैक्टर would include salinity and ocean current। तो बेसिकली मेराइन इकोसिस्टम रे सालिनिटी और करेन्ट को मध्य से माने फैक्टर हिसाब रे नियंती कहना यार मध्य इंपोर्टेंस अच्छी मेराइन इकोसिस्टम पाई ठीक अच्छे। तेणु आबायोटिक किंबा बायोटिक फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए यूनिक इकोसिस्टम। तेणु दी जनकर कौन अच्छी से दी जन जाक एका सांगे काम करती इकोसिस्टम रे ठीक अच्छे। तब देखो an abiotic factor is a non-living component in the environment. This can be either a chemical or physical presence. Abiotic factor fall into three basic category। बेसिकली देखो abiotic factor तीन टा कैटेगरी आसला गोटे अच्छे क्लाइमेटिक गोटे अच्छे एडाफिक आ गोटे अच्छे सोशल ठीक अच्छे। तो देखो क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड ह्यूमिडिटी सनलाइट एंड फैक्टर इनवॉल्विंग द क्लाइमेट्स। तो जो एंड फैक्टरटा क्लाइमेट सहित इनवॉल्वमेंट अच्छी ताको आम क्लाइमेटिक फैक्टर कहबा। तो देखो एडाफिक फैक्टर कौन एडाफिक फैक्टर जोटा हूँ रेफर्स टू सॉइल कंडीशन अर्थात सॉइल जो प्रकार कंडीशन थाए ताकू नहीं आम एडाफिक फैक्टर कहबा। सो एडाफिक एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड सॉइल एंड जियोग्राफी ऑफ द लैंड। तो गोटे जगह को प्रकार से जगार जो माटी अच्छी से माटीर केते उर्वरता अच्छी कि नहीं से केते मिनेराल्स कंटेंट अच्छी बा केते सेटा तुम से तार सांद्रता केते अच्छी जहाँ भी अच्छी सब से सब नहीं सॉइल कंडीशन को नहीं एडाफिक आबायोटिक फैक्टर है। तापर देखो सोशल फैक्टर इंक्लूड हाउ द लैंड इज बीन यूज एंड वाटर रिसोर्स इन द एरिया। तो गोटे सोशल फैक्टर माने कौन जो जगार गोटे जो लैंड अच्छी से लैंडटा कौ प्रकार व्यवहार कराऊँगी मनुष्य द्वारा हो कि जमती भी हो कौ प्रकार व्यवहार कराऊँगी एवं सेठारे पानीर जो अभावता अच्छी बा पानी सफिशिएंट अच्छी ताकू नहीं आम सोशल फैक्टर बोलिकिना ताकू इंक्लूड करूँ। तो तुम तीन कैटेगरी कौन जान लो आ बुझी भी पाल। तो 5 कॉमन आबायोटिक फैक्टर जमती अच्छी देखो एटमॉस्फेयर केमिकल एलिमेंट सनलाइट किंबा जोड़ा आम टेम्परेचर एक्चुअली कहीं सनलाइट इंक्लूड अच्छी कारण आम जाचु जो टेम्परेचर अच्छी सेटा हूँ तुम हिट जो अच्छे से प्रायतः सनलाइट सन लाइट रु ही क्रिएट होता है आ सनलाइट तुम जाच। तापर देखो विंड एवं वाटर। तो युवाक हूँ तुम 5टा बेसिक कंपोनेंट ठीक अच्छे आबायोटिक फैक्टर। तब देखो an abiotic factor is a non-living component in the environment. This can be either a chemical or physical presence. Abiotic factor fall into 3 basic category। देखो से पैराग्राफटा बोधे आउ थे रिपीट होती तेणु यहाँ लिखा दरकार नहीं ठीक अच्छे यहाँ लिखा दरकार नहीं तुम यहाँ नोट बनवा दरकार नहीं ठीक अच्छे क्या आउ थे तुम रिपीट होती ठीक अच्छे। हाँ ये नोटा को तुमको करवा दरकार नहीं यहाँ हूँ तुम आउ थे रिपीट होती छाड़ी दियो ठीक अच्छे नोट बनाओ ना है। अच्छा नेक्स्ट देखा आम लाइट को देखा।
ठीक अच्छे। तो प्रथम आम आज लाइट को देखा तापर टेम्परेचर को देखा। तो देखो लाइट इज ए कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल फैक्टर दैट प्रोड्यूस डाइवर्स इकोलॉजिकल इफेक्ट। लाइट एनर्जी तो लाइट बेसिकली कौटू आसता है सनलाइट रू आसता है ऑब्वियसली है इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन नियरली ऑल इकोसिस्टम। कहीं एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कह जाए तुम्हें जानिच आमर जो बायोटिक फैक्टर अच्छी गोटे हूँ प्लांट गोटे हूँ एनिमल्स तापर हूँ गोटे हूँ तुम माइक्रो ऑर्गानिज्म है। तो सबुठ प्रथमे प्लांट्स को आस ये कौन करे तार जो फोटोसिंथेसिस द्वारा खाद्य प्रस्तुत करे। तो से फोटोसिंथेसिस सबुठ प्रथमे से कौन करे सनलाइट को से व्यवहार करे। मन कर यहाँ सन सन रु से सनलाइट को से व्यवहार करी फोटोसिंथेसिस द्वारा कौन करे खाद्य प्रस्तुत करें है। तो देख जेहेतु फोटोसिंथेसिस रे से तार खाद्य प्रस्तुत करिकिना प्लांट तार समस्त पार्ट को तार जो कार्बोहाइड्रेट प्रस्तुत खाद्य को दे थाए तेणु सबुठ प्रथम प्राइमरी सोर्स किए हम एनर्जी पाई सेटा हम सनलाइट। ठीक अच्छे। तो यहाँ क्लीयर हो गल कहीं प्राइमरी रिसोर्स कह जाए है। इट इज द एनर्जी दैट इज यूज बाय ग्रीन प्लांट जोटा मुझे आगु कहूली है जार कि क्लोरोफिल था यहाँ तुम आगु जाच ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ए प्रोसेस ड्यूरिंग which plant manufacture organic substance by combining inorganic substances। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस कौन फोटोसिंथेसिस गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे कि प्लांट कौन करे निजर खाद्य प्रस्तुत करे केमिति प्रस्तुत करे जोटा हूँ आम जानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रस्तुत करे से केमती इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मान को नहीं कंबाइन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाद्य प्रस्तुत करें। तापर देख नेक्स्ट होची visible light is of the greatest importance to plant because it is necessary for photosynthesis। Factors such as quality of light, intensity of light and the length of the light period है जोटा कि डे लेंथ है प्ले एन इम्पोर्टाट पार्ट इन द इकोसिस्टम। तो बेसिकली आम जब लाइट को देखा तो लाइटर भी क्वालिटी केमती हवा अच्छी तो गोटे बेस्ट क्वालिटी लाइट हवा अच्छी तो तार इंटेंसिटी भल हबार अच्छी आउ गोटे लाइटर लेंथ केते ड्यूरेशन केते जोटा कि हूँ डे टाइम है। तो से डे टाइम रे तार ड्यूरेशन केते लाइटर ये सबूतक इम्पोर्टाट रोल प्ले करे कौन इकोसिस्टम प्ले करे है। तब देख एबे किछिटा पॉइंट आमे पढ़िबा तबे पॉइंट कौन तुम जानिच भी है मु खाली पढ़ुची तुम शुण है। तब देख प्रथम हूँ देखो सनलाइट इज ऑल्सो यूज फॉर एनर्जी जोटा कि फोटोसिंथेसिस कहीं द फूड फ्रॉम प्लांट सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग थिंग द ऑन अर्थ। तो बेसिकली सनलाइट हूँ यूज करा जाए फोटोसिंथेसिस रे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो कि से एनर्जी पाई थाए आउ एई जो खाद्य को अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी आम पृथ्वी पृष्ठ रे से माने मध्य व्यवहार करती। तो देख स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ सनलाइट आर इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ आउ देख अमाउंट ये दुटा को मेन पॉइंट। तो कहीं हूँ इम्पोर्टाट कहीं देख जोटा आम डिजर्ट देखा डिजर्ट रे काकटी कैन सर्वाइव व्हेन सनलाइट इज स्ट्रंग तेणु स्ट्रंग रो इम्पोर्टेंस अच्छी जदि सनलाइट स्ट्रंग अच्छी तो काकटी परी लिविंग थिंग मध्य सर्वाइव करि पारे। सेमती फॉरेस्ट रे देख मोसेस एंड फन डू वेल विथ लेस लाइट। तो तेणु जदि जदि जो फॉरेस्ट को आम देखा फॉरेस्ट रे जदि लाइट जदि लेस थी बा कम मात्रा लाइट थी तार से प्रकार जगार मस हो बा फन हो एमाने अधिक मात्रा रे कौन करती ग्रो करि पारंती। तेले आम स्ट्रेंथ रो सनलाइट रो स्ट्रेंथ कौन आउ एमाउंट कौन केते इंपोर्टेंट होला तुम जानि पारलो गोटे इकोसिस्टम पई। सेम देखबा ओशियन रे देखबा ओशियन इकोसिस्टम रे डीपर वाटर लेस लाइट एटा आमे जानिचु जेति की पानी रो गभीरता थाए सेति की वाटर मध्य लेस थाए। ठीक अछि। अब देखो photosynthesis only perform to the first 100 meters below the surface कहीं ना आमे जानिचु जे जो पानी अच्छी पानी रो पाखापाखि 100 मीटर पर्यंत कौन होता है सनलाइटा जाए किंतु तापर आउ सनलाइट तल को जाए नहीं तेणु तले लेस वाटर थाए। देखो द क्वालिटी ऑफ लाइट है और कलर तापर देखो एटा मध्य गोटे इम्पोर्टेंट
तापर देख प्लांट एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट देख यहाँ को तुम नोट बनाओ ठीक अच्छे कि नोट बनई अंडरलाइन कर प्लांट एब्जॉर्ब ब्लू एंड रेड लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने तुम ऑब्जेक्टिव दृष्टि बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द क्वांटिटी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज मच इन एक्वाटिक इकोसिस्टम द क्वांटिटी ऑफ लाइट कैन बी लिमिटेड फैक्टर ठीक अच्छे लिमिटिंग फैक्टर है तो जेहेतु आम जदि देखा गोटे जदि एक्वाटिक इकोसिस्टम देखा सेठी आमर लाइटा गोटे लिमिटिंग फैक्टर हिसाब से काम करे तो लिमिटिंग फैक्टर कौन तो मुझे तुमको प्रीवियस क्लास रे बतई आ जो मैंने भी आज नुआ अच्छो से प्रीवियस क्लास भी देख जे लिमिटिंग फैक्टर होची जे कि गोटे जगह नॉन बायोटिक फैक्टर हो बा नॉन बायोटिक हो तांको कौन करते तांकर परिमाण को कमई था लिमिट करता लिमिटिंग फैक्टर कहती तेणु एक्वाटिक इकोसिस्टम रे लाइट रो बहुत इंपोर्टेंस अच्छी लिमिटिंग फैक्टर हिसाब से ठीक अच्छे अधिक लाइट हेले सेटारे मनकर किसी लिविंग थिंग अच्छा जो मैंने लोप पाई पारती कि लाइट्र अभावतार बढ़ी पारती यही प्रकार तेणु तुम लिमिटिंग फैक्टर बोली कहि परिबा बोथ ब्लू एंड रेड लाइट आर एब्जॉर्ब एंड आज ए रिजल्ट डू नॉट पेनिट्रेट डीपली इनटू द वाटर तो जेहेतु एमाने रेड आ ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती जहाँ जो एमाने डीप वाटर को माने अधिक गभीर थिबा पानी रे एमाने जाई पारो कुड़ा जाई पारेनी लाइटटा क्रॉस करी पारे नाही हैला टू compensate for this some algae have additional pigment which are able to absorb other color as well एई कारण पाई जो आल्गी अछंती से आल्गी माने कोन करती से माने तांको देहरे अलगा प्रकार किछि गोटे पिगमेंट थाए जे कि अलगा टाइप रो कलर को मधो एब्जॉर्ब करथाय हैला तब देखो लाइट इंटेंसिटी माने कौन जो स्ट्रेंथ ऑफ लाइट है तब देखो द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट दैट रीच द अर्थ वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड एंड द सीजन ऑफ द इयर्स तो बेसिकली देखो जो लाइट रो इंटेंसिटी अच्छी बा स्ट्रेंथ अच्छी सेटा कौन जो आम पृथ्वी पृष्ठ रे पहुँचवा पाई हेले ताकू एक्चुअली बेसिकली तार आम पृथ्वीर लैटिट्यूड हो बा आमर जो पृथ्वी पृष्ठर सीजन हो यार उपरे संपूर्ण भाव में निर्भर करे कहीं तुम्हें भी जान आम पृथ्वीर आकार होची यही प्रकार आ सबू जगार समान भाव में सूर्य मनकर सूर्य जब ये अच्छी तो डायरेक्ट यही जगार अधिक किरण पड़े किंतु एज कंपेयर यही जगार हो बा यही जगार हो बा दुईटा जो मेरु अच्छी है दुईटा पोल पोल जो उत्तर मेरु बा दक्षिण मेरु अच्छी से कम मात्रा लाइट पहुँची थाए तब देख द सदर्न हेमिस्फीयर है रिसीव लेस देन 12 hours of sunlight during the period between the 21st March and the 23rd of September एटा आमे समस्ते आगु जानिचु तुम जियोग्राफी भी पढ़ी जे 21 मार्च रे हो 21 मार्च रे हो बा 23rd सेप्टेम्बर हो आम जो सदर्न हेमिस्फीयर अच्छी ठीक अच्छे से जगार कम कम सनलाइट से रिसीव करें ठीक अच्छे एवं but receive more than 12 hours of sunlight during the following 6 months है एटा आमे जानिचु तब नेक्स्ट देखो डे लेंथ माने कौन लेंथ ऑफ द लाइट पीरियड अर्थात सूर्य उदय ठारू नहीं ना अस्त पर्यंत जो समय है तापर देखो सर्टेन प्लांट्स फ्लावर ओनली ड्यूरिंग सर्टेन टाइम ऑफ दिस द पीरियड किछिटा प्लांट्स अच्छे जो माने कि सर्टेन टाइम जो अच्छे से माने ग्रो करथंती बा फुटी थांती वन ऑफ द सीजन फॉर दिस इज दैट these plants are able to measure the length of the night जोटा से dark period however it was thought that it is the day length है जोटा से light period to which plant react and this phenomenon was termed photoperiodism तो basically देखो से कौन कही जे जो आमर जो प्लांट अच्छी से कौन करे लेंथ जो अच्छी तार लाइट लेंथ अच्छी रातिटा है रातिर जो लाइट ताकू छाड़ीदे जो दिन लाइट लेंथ अच्छी से कौन ग्रो करी थाए ठीक अच्छे कि रातिर से किंतु ग्रो करी पारे नहीं है तापर देख फोटो पीरियडिज्म
can be defined as the relative length of the daylight and darkness that affect the physiology and the behavior of an organism. तो बेसिकली जो लाइट अच्छी डे लाइट अच्छी तार सहित गोटे डार्कनेस बा नाइट्र जो अंधार अच्छी यही भितर जो इफेक्ट करता है कौ प्रकार इफेक्ट फिजियोलोजी इफेक्ट होता बा जो बिहेवियर होता है गोटे ऑर्गेनिज्म बिहेवियर होता है कहीं तुम जानिच आम जदि एनिमल बिहेवियर विषय पढ़ा लाइट रे एनिमल बा प्लांट्स माने कौ प्रकार बिहेवियर करती बा माने जोटा डार्कनेस रे कौ प्रकार बिहेवियर करते आम जानिबा तो ये सब इफेक्ट करता है तापर तो शॉर्ट डे प्लांट तापर देखो दिस प्लांट फ्लावर ओनली if they experience night which are strong longer than a certain critical length देखो क्राइसान्थेमम जोड़ा अच्छी से कौन करे द पोइनसेटिया आउ देखो एंड द थ्रोन एप्पल है आर एग्जांपल ऑफ शॉर्ट डे प्लांट तो बेसिकली तीनटा हूँ तुम शॉर्ट डे प्लांट एग्जांपल है तापर देखो लॉन्ग डे प्लांट्स तो लॉन्ग डे प्लांट्स कौन दिस प्लांट फ्लावर इफ दे एक्सपीरियंस नाइट व्हिच आर शॉर्टर है जदि एमानक रातिटा कम कम थी छोट माने कम तार जो लेंथ अच्छी रातिर एटा कम थी देन द सर्टेन क्रिटिकल लेंथ तार देखो स्पिनाच व्हीट बार्ली क्लोभर एंड रेडिश आर द एग्जांपल है तो एगुड़ा हूँ तार एग्जांपल तापर देखो डे न्यूट्रल प्लांट तापर देखो फ्लावरिंग ऑफ द डे न्यूट्रल प्लांट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नाइट लेंथ तापर देखो द टोमेटो एंड द मेज प्लांट आर द एग्जांपल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट तापर देखो फोटो ट्रोपिज्म is the directional growth of the plant in response to light where the direction of the stimulus determines the direction of movement. Stem demonstrate positive photoperiodism tropism that is they came together the light and they grow. तापर देखो फोटोटाक्सिस कौन फोटोटाक्सिस तुम आगु जानिच जे फोटोटाक्सिस बिहेवियर कौन एनिमल्स मानकर फोटोटाक्सिस इज द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म इन रेस्पॉन्स टू द यूनिलैटरल लाइट सोर्स where the stimulus determine the direction of the movement अर्थात गोटे प्लांट्स हो बा गोटे एनिमल्स रो लाइट आड़ को हो बा लाइट रो विपरीत को हो जो मूवमेंट होता है ताको फोटोटाक्सिस बिहेवियर बोली कहा जाए तो देखो वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लोकोमोशन locomotory activity of the animals which is dependent on the intensity of light stimulation and not the direction is called photokinesis तापर देखो फोटोनास्टी कौन फोटोनास्टी होची फोटोनास्टी इज द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू द लाइट सोर्स बट the direction of the stimulus does not determine the direction of the movement of the plant. तो देखो light require a plant differ and as a result distinct layer or stratification can be observed in an ecosystem. Plant which grow well in bright sunlight are called heliophyte. है जो माने कि सनलाइट उपस्थिति भल कि ग्रोथ करती ताको हेलियोफाइट बोली कहा जाए एंड प्लांट व्हिच ग्रो वेल इन शेडी कंडीशन आर नोन एज सायोफाइट्स है जोड़ा कि शेड ग्रीक वर्ड शेड रु आसी आउ हेलियोफाइट माने ग्रीक वर्ड हेलियोस जोड़ा कि सन रु आसी ठीक अच्छे बर्तमान आम प्लांट्स रो जानले बर्तमान आम देखा एनिमल्स ऊपर देखा देखो लाइट प्लेज एन इम्पोर्टाट रोल ऑन द एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स व्हिच आर कौन कौन देख गोटे हूँ मेटाबॉलिज्म तुम जान मेटाबॉलिज्म केमती साहाय्य करे द मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स आर अफेक्ट बाय लाइट थ्रू इट्स हिटिंग इफेक्ट ऑन टिश्यू जेहेतु टिश्यूर हिटिंग इफेक्ट द्वारा
मेटाबॉलिज्म होता है तेणु एनिमल्स मेटाबॉलिज्म रे लाइट रो इंपोर्टेंस बहुत अच्छी इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ये कौन करे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करता है एंड इन डिग्री ऑफ solubility of salt and minerals animals residing in cave slow metabolic activity तब देखो locomotion in some lower animals is regulated by light a phenomenon known as photokinesis for example blind larva or mossel crab तो देखो यहाँ हूँ एग्जांपल कौन ब्लाइंड लार्वा और मोसेल क्राब तो एमाने कौन करते मूव एट ए फास्टर रेट व्हेन एक्सपोज टू द इंक्रीज लाइट इंटेंसिटी तो देखो एमाने कौन करते एमाने कौन करथांती एमानक लोकोमोशन केमती होता है जितेबाला लाइट रो इंटेंसिटी बढ़ी थाए एमाने मध्य शीघ्र शीघ्र मूव करि पारंती तब देखो लोकर स्टॉप देयर फ्लाइट व्हेन द सन गेट हिडन बाय द क्लाउड लोकस्ट गोटे प्रकार एनिमल्स अच्छी है ये कौन क्रिएचर अच्छी जे कि कौन करे तार फ्लाइट बा उड़ीबा को से बंद कर दिए केतेबेले बंद कर दिए जितेबाला सन कौन करे बा सूर्य कौन करे क्लाउड बा जो मेघर पछपटे जदि लुचिगला बा सनलाइट जदि आसला नहीं ताहले ये मध्य तार उड़ीबाटा को बंद कर दिए तापर देखो नेक्स्ट the movement of animals in response to light है light is called phototaxis तापर देखो जदि लाइट रो रेस्पॉन्स को नहीं कि ना एनिमल्स मान जो मूव करती ताको फोटोटाक्सिस कहा जाए सच मूवमेंट आर कॉल्ड फोटोटैक्टिक है सम एनिमल्स लाइक यूग्लिना etc are said to be positively phototactic as they move towards the light source तो लाइट जो मन कर ये सनलाइट अच्छी तो ये कौन करबो यूग्लिना कौन करबो सन आड़ को से मूव करि थाए ठीक अच्छी माने से डायरेक्शन में मूव करि थाए तेणु ताको कहा जाए जे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक बोली कहा जाए अदर लाइक आर्थवर्म स्लग तापरे कोपेपड एक्सेट्रा मूव अवे फ्रॉम द लाइट तो एमाने कौन करते मन कर जो ये सन अच्छी है तो एमाने कौन करते ये एनिमल्स माने तार अपोजिट को से माने मूव करि थांती ठीक अच्छी तो ताको कहा जाए नेगेटिव फोटोटैक्टिक ठीक अच्छे तो जी सन आड़ को मूव करे ताको पॉजिटिव फोटोटैक्टिक बोली कहा जाए आ जे तार अपोजिट को मूव करि ताको फोटो नेगेटिव फोटोटैक्टिक बोली कहा जाए ठीक अच्छे तापर देखो some animals like polyps of many coelenterate show movement of only a part of their body in response to light and are thus termed as phototropism है तापर देखो रिप्रोडक्शन देखिबा the gonad in some birds becomes active with increasing light intensity तो देखो लाइट इंटेंसिटी रे किछिटा बार्स अछि जो मानको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोन करथाय से माने एक्टिव हेई थांती दस लाइट इनिशिएट ब्रीडिंग एक्टिविटी तो जदि से मानको जदि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जदि एक्टिव हैला ताले से माने ब्रीडिंग करि परिबे हैला सम एनिमल जोटा कि शीप गॉट डियर एक्सेट्रा आर शॉर्ट डे एनिमल्स एंड दे कैन बी brought to sexual act by decreasing the length of the exposure to daylight तो एमाने कहते daylight रो जतकी डिक्रीज हैला ताले एमाने सेते बेले एकिन ताको सेक्सुअल एक्ट करि थांती ठीक अछि को माने एग्जांपल हैला शीप हो गोट किबा डियर हो ठीक अछि एनिमल्स लाइक स्टार्लिंग टर्की एक्सेट्रा आर लॉन्ग डे एनिमल्स व्हाइल स्क्वारल तापर देखो गुइनिया पिग एक्सेट्रा आर द indifferent towards the length of the light exposure तो बेसिकली जदि तुम तीन चार्टा एग्जांपल देले भी बहुत ही जीवो हैला तो तुम एठू दुई तीनटा भी एग्जांपल देई पारो तब देखो डेवलपमेंट तो डेवलपमेंट रे को प्रकार लाइट रो इंपोर्टेंस अछि देखो द लार्वा ऑफ साल्मन अंडरगोज नॉर्मल डेवलपमेंट व्हेन एक्सपोज अंडर सफिशिएंट लाइट कंडीशन तो एमाने जदि साल्मन रो केमती डेवलप होता है साल्मन रो जो लार्वा अछि जदि लाइट कंडीशन जदि सफिशिएंट थिवो ताले से मानको नॉर्मल डेवलपमेंट हेई थाए हाउएवर रैपिड मोर्टालिटी टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट तो एब्सेंस जदि लाइट रो जदि एब्सेंस हे गला ताले माने रैपिडली मानकर मोर्टालिटी हे जाई थाए ठीक अछि स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन इन फिश is initiated by the rate of change of daily photo
period. The larva of mytilus develop better in darkness than in light. तो जदि लाइट ठारू जदि डार्कनेस थिबो ताहले माइटिलस रो मध्ये डेवलपमेंट बेटर होई थाए. तो एई प्रकार माने लाइट उपरे डिपेंड करले ठीक अछि ताको डेवलपमेंट पाई. तापर देखो आइज इन केस ऑफ केव ड्वेलिंग proteus anguinus and deep sea fishes the eyes are totally absent or rudiment. तो एमानकर आखि नहीं बा एमानकर आखिर कौनसी इम्पोर्टान्स नहीं ठीक अच्छे एमानकर absent माने एमानकर vision capacity एते न थाए. This occurs due to the absence of light in this habitat. जेहेतु सेटारे लाइट रो absence थाए लाइट नहीं ताले एमानकर आखिर भी कौनसी आवश्यकता नहीं ठीक अछि. तब देखो some deep sea fishes do have larger eyes than the normal eyes to capture any rays of light than might be present. However, there is total absence of cone in these eyes. तो देखो नेक्स्ट आम देखा जो यहाँ आम तुम नोट बन पार है बेसी किसी मुझे बुझौनी. देखो सिंथेसिस ऑफ कैल्शियम. तो कैल्शियम सिंथेसिस इन बोन रिक्वायर सनलाइट. बुझीपार तो यहाँ मध्य इम्पोर्टाट पॉइंट जे सनलाइट द्वारा आम कैल्शियम जो सिंथेसिस होता है सेटा त्वरान्वित होता है ठीक अच्छे जहाँकि आमको बोन रे निहाती दरकार. द बोन ऑफ द डीप सी फिशेस आर ब्रिटल आज दे आर अनेबल टू सिंथेसिस कैल्शियम ड्यू टू द टोटल absence of sunlight. तार देखो पिगमेंटेशन. द प्रोसेस ऑफ पिगमेंटेशन इन एनिमल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट. कहीं ना coloration and the mimicry are best exemplified in the presence of light. तो एमान को जो पिगमेंटेशन होता है बा लाइट जो कलरिंग होता है एटा मध्य सनलाइट रो इन्फ्लुएंस ही होता है. तापर देखो फोटो पीरियडिज्म. तो फोटो पीरियडिज्म कौन फोटो पीरियडिज्म ऑन द टोटल लाइट पीरियड हैज profound effect on animals through such process as gonadal activity, reproduction, metamorphosis, migration, etc. Migration of birds and fish are known to be affected by photoperiodism. है early maturation in certain catfish seem to be induced by कौन strong period of day. जमती कि देख विटामिन डी फॉर्मेशन तापर अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन ऑफ द सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द विटामिन डी प्रोडक्शन इन द एनिमल्स. तो एगुड़ा सब तुम जानिच नोट बन पार. तापर देख इफेक्ट ऑन प्लांट कौन. तो बेसिकली आम जेहेतु एनिमल्स उपर बेसी फोकस करवा प्लांट उपर नहीं तो तेणु ए किछिटा खाली एग्जांपल तो दे देछि तुम एटा को नोट बनै दियो. जमती देखो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट तापर फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे तापर वेजिटेटिव फेज सेव करिथाय तापर देखो प्लांट टिश्यू पई से इफेक्ट करिथाय तापर देखो प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल करिथाय तापर देखो नंबर एंड पॉजिटिव ऑफ क्लोरोप्लास्ट तापर देखो लीफ स्ट्रक्चर स्टोमाटल मूवमेंट ट्रांसपीरेशन ग्रोथ है तापर फ्लावर फ्रूट एंड सीड तापर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट. तो यही प्रकार यही सब इम्पोर्टाट पॉइंट उपरे से इफेक्ट करिथाय ठीक अछि. देखो तुम स्क्रीनशॉट नहीं किना मते लिखि पारो कि एबे बसिक नोट भी बनै दियो ठीक अछि. तापर देखो एटा तो तुम जानिच केमती स्टोमाटार ओपनिंग हुए केमती क्लोजर हुए जहाँ जहाँ भितर कि बीन सेप थाए ना बीन सेप से तुम जो स्टोमाटा ओपनिंग हम केमती सनलाइट रे से सनलाइट को केमती कैप्चर कर तुम ऑलरेडी बॉटनी रे +2 रे पढ़ी सारी ठीक अच्छे. बर्तमान आम आसवा टेम्परेचर को. तो देखो टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड वाटर अफेक्ट एनिमल प्लांट एंड ह्यूमन इन इकोसिस्टम. ए राइज इन टेम्परेचर हैज द पोटेंशियल टू चेंज द वे ए लिविंग थिंग डेवलप बिकॉज इट चेंज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो लाइट रो कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करछि गोटे ऑर्गेनिज्म रो मेटाबॉलिक रेट केमती होता है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए टॉलरेंस लेवल फॉर
temperature range. For example, a human being could die if the stood out in minus 50 degree temperature for any length of the time. तो बेसिकाली गोटे ह्यूमान केतेबेले डेथ हो जाए जदि आम जदि एनवायरनमेंट टेम्परेचर 50 डिग्री रू भी माने -50 डिग्री जदि ହେଇଗଲା ताले गोटे ह्यूमान डेथ ही थाए जदि ताको आमे एक्सपोज करदेबा बा बाहर रखीदेबा हैला तेणु लाइट टेम्परेचर बहुत इंपोर्टेंस अच्छी लाइट एक्सपोजर often affect the temperature areas with direct sunlight and warmer है तो बेसिकली जब आम कह लाइट आउ टेम्परेचर कौन एक अन्य माने लाइट उपरे टोटाली टेम्परेचर डिपेंड करे ठीक अच्छे जदि लाइट जदि सनलाइट जदि अधिक इनक्रिज कला ताले टेम्परेचर इनक्रिज करें आम आगु जाचु ठीक अच्छे आउ टेम्परेचर बढ़िबार अन्य गुड़िक फैक्टर भी अच्छी टेम्परेचर बढ़िबा हो बा कमिबा हो तो अन्य फैक्टर थाए ठीक अच्छे किंतु सनलाइट होची मेन सोर्स बा मेन इंपोर्टेंट पॉइंट कहीं ना टेम्परेचर को इंक्रीज करने बा डिक्रीज करने तापर देखो द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर टेम्परेचर तुमको जब किए पचारे ताले टेम्परेचर माने कौन जो हीट इंटेंसिटी अच्छी ताको मेजरमेंट कले ताको हमें टेम्परेचर बोली कहू द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉमनली एक्सप्रेस इन डिग्री और फारेनहाइट स्केल और ऑन सेल्सियस स्केल तो बेसिकली आम ताको टेम्परेचर केते अच्छी एतकी डिग्री अच्छी बा फारेनहाइट रे आम स्केल करि पारू किंबा सेल्सियस रे स्केल करि पारू तो मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन जोटा कि मुझे पूर्वर कही ठीक अच्छे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ आमर हीट एनर्जी हूँ आम कौन सन कहीं हीट एनर्जी क्रिएट है माने टेम्परेचर क्रिएट होता है तब देखो एक्सट्रीम वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम डे टू नाइट तो देख डे हो बा नाइट हो यार टेम्परेचर कौन भेरी करें कहीं नाइट टाइम टेम्परेचर टी कम थाए आ डे टाइम टेम्परेचर अधिक थाए एंड फ्रॉम सीजन टू सीजन आ सीजन को सीजन भेरी करे कारण आम जानी विंटर सीजन कौन समर सीजन कौन मझे मनकर आमर ऑटम भी पड़ पाए स्प्रिंग सीजन पड़ पाए रेनी सीजन पड़ पाए तो सीजन उपर टेम्परेचर डिपेंड करे ठीक अच्छे तापर देख ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन टॉलरेट वाइड फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर आर टर्म यूरीथर्माल है जो माने टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को बा टेम्परेचर बढ़िबा हो बा कमिबा हो ताको से माने टॉलरेट करि पारंती जो एनिमल माने ताको यूरीथर्माल बोली कहा जाए तार एग्जांपल होची लिजार्ड बार्ड किंबा मामाल जमती कि आमे माने कौन करथाउ आमे समर रे भी आमे निजको खाप खोई चली पारू विंटर रे भी निजको खाप खोई चली पारू तो टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन हुए ताको आमे खाप खोई चली पारू तेणु हमको यूरीथर्माल बोली कहा जाई पारे तब देखो organism which can tolerate only small variation in temperature are known as stenothermal organism जैसे कि होची कोरल एनिमल किंबा फिश हो तब देखो प्रोवाइड वार्मथ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म तब देखो प्रोवाइड सोलार एनर्जी मध्य देता है फॉर ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड द numbers of hour of daylight जोटा ट्रिगर्स सीजनल इफेक्ट बेसिकली ये सीजनल इफेक्ट को इवेंट को ट्रिगर करि थाए कहीं देखो आम जान प्लांट रो फ्लावरिंग हेबा बार्ड्स रो माइग्रेशन हेबा ए सबू तक डिपेंड करे हमर कोन तमर डे लाइट ऊपर डिपेंड करि थाए तापर देखो आउ मध्य कोन कर देखो चेंज इन टेम्परेचर आम चेंज इन टेम्परेचर अनुसार टेम्परेचर चेंज जो होता है ताको आम बेसिकली कौन करते हॉराइजॉन्टल चेंज रे नहीं पारिबा तो हॉराइजॉन्टल चेंज माने कौन द चेंजेस इन टेम्परेचर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरी considerable generally in tropical region average temperature is 32 degrees celsius and minus 12 degrees celsius for the polar region in the sea average temperature run from about 30 degrees celsius in the tropical region and minus 1.5 degrees celsius in the arctic and the antarctic region तो एटा एक्सप्लेन करूनी यार अर्थ कौन तुम बुझी सारी ठीक अच्छे एटा एकदम सिंपल वर्ड रे अच्छी
ता देख वर्टिकल चेंजेस कौन ताको आम जानू हराइजंटाल चेंजेस बोली कहा जाए हराइजंटाल चेंजेस माने कौन हराइजंटाल चेंजेस माने आम जानलु जे तुम हराइजंटाली जो आम जो भाग कराई पृथ्वी को है केते डिग्री बा केते डिग्री से अनुसार आमर कौन होता है जो टेम्परेचर डिपेंड करता है ठीक अच्छे तब देख वर्टिकल कौन वर्टिकल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द एयर varies widely according to the local condition but a decrease of about 1 degree Celsius for every 1.5 meter of altitude is generally found तो प्रत्येक 1.5 मीटर अल्टीट्यूड रे कौन होता है 1 डिग्री कौन होता है आमर सेल्सियस जोटा कि कमी थाए है in the temperate and the tropical region of the sea and the permanent thermal gradient is produced during mixed layer near the surface and deep layer of the bottom. The depth and extent of the zone of rapid temperature change is known as permanent thermocline layer which is up to 1200 meter deep in central Atlantic Ocean. तब देखो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन कौन इन फ्रेश वाटर टेम्परेचर शोज वेरियस डिग्रीज जोटा हूँ इन द डिफरेंट लेयर बीन मोर प्रोमिनेंट इन पेरेनियल लेक as the temperature approaches 4 degrees Celsius the density of water increase thus deeper lake if covered with winter ice for some week and not exposed to direct wind action shows annual cycle तापर एते किछटा पॉइंट देखबा इन द विंटर पीरियड द सरफेस वाटर इज कूल्ड to freezing ice which prevent the cooling of water below it. Below this ice layer temperature fall to about 2 degrees Celsius and this stratum of water remain below the ice due to lightness है तापर देखो with the advent of spring season the ice melt till temperature reach to 4 degrees Celsius and thus water has some uniform temperature এটা ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝଉନି କାରଣ ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷରେ ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ ନେଇକିନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାର ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଡ୍ୟୁରିଂ ସମରରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ देख टेम्परेचर इफेक्ट कौन कौ प्रकार सीजन रे टेम्परेचर इफेक्ट कौ प्रकार पड़ुची तुम जब दुई तीन टा पॉइंट करके लिखिपार लिखले भी तुम भल मार्क तुम पाइपर देयर अकर्स ग्रेटली राइज इन टेम्परेचर कॉजिंग स्ट्रैटिफिकेशन इन वाटर अपर द अपर वार्मर लेयर आर टर्म epilinium that temperature range from 21 degrees Celsius to 22 degrees Celsius. This layer lying above the thermocline and wind strip and the largely homogeneous. The basal or the bottom layer shows the temperature of about 5 degrees Celsius and are called hypolimnium. This is relatively stagnant water layer. Between these two strata, there is present transition intermediate zone called thermocline, having temperature from 5 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. In marine ecosystem, temperature range from -3 degrees Celsius to 42 degrees Celsius, exhibiting great diversity. In Arctic and Antarctic water, temperature is extremely lower, reaching to ice freezing point. Whereas in temperature and tropical region, it may reach up to about 42 degrees Celsius. Seasonal change in vertical temperature structure cause thermal stratification. तापर देखो winter stagnation occurs when lake is ice cover and summer stratification is found when surface layer are warm.
ता देख some desert may show even higher temperature of about 50 डिग्री सेल्सियस तो डिजर्ट 50 डिग्री सेल्सियस पर्यंत आजिकल तो बेसी भी टेम्परेचर जाऊँगी है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम exhibit seasonal fluctuation in the temperature and other factor like humidity water and wind greatly affect it तो बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सेठी कौन होता है तुमर फ्लक्चुएसन होता है फ्लक्चुएसन माने कौन टेम्परेचर तुम बढ़िया कम एमती बढ़ एमती कम एमती बढ़ एमती कम जहाँ भी हो जोटा कि सीजनाल होता है तुम जान समर सीजन रे टेम्परेचर कौन होता है हाई होता है से जगह तुमर विंटर सीजन रे एकदम लो हो जाए तापर तुमर जो आम स्प्रिंग सीजन देखा मिक्स टाइप रो थाए है ना तो टेम्परेचर फ्लक्चुएसन होता है तापर डोर्नाल टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस नॉक्चरनल फ्रॉम 19 डिग्री सेल्सियस रु 12 डिग्री सेल्सियस तो देख नॉक्चरनल माने कौन यहाँ हूँ नाइट टेम्परेचर है तापर डोर्नाल माने कौन डे टेम्परेचर ठीक अच्छे तो केते रु केते आसी था ये से कही बेसिकाली ये आइडिया देती है तो बेसिकाली जब आम यही जिनसा को लक्ष्य करवा भी देख टेम्परेचर केमती एफेक्ट करें तो देख गोटे एनुअल साइकिल जो देखा विंटर रे कोल्ड है तापर आसला स्प्रिंग रे मिक्स आसला तापर देख आर्ली समर रे भी कोल्ड थी है वार्म कोल्ड मिसिकिना ठीक अच्छे तापर देख तुम जब एट को आसी जा लेट समर को ऊपर सरफेसटा संपूर्ण भाव में वार्म थी और तल सरफेसटा कोल्ड थी तापर आउ टे आर्ली फॉल जा ये आहरी वार्म होती कोल्ड संख्या देख ये कमी कमी आसूँ कोल्डटा कमी जाइए आ वार्मरटा बढ़ी बढ़ी जाइए आ संपूर्ण भाव में जब एट को पलि आसवा फल एट को जब आसवा ये जगह कौन मिक्स टाइप एनवायरनमेंट देखा तो यही प्रकार यही प्रकार आमर कौन जी पृथ्वीर जो टेम्परेचर भेरी करे तब देख रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस तो मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कौन द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन लाइव डेफिनेटली कॉल्ड मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर तो यहाँ ये गोटे बुझेबार पॉइंट आसीगला तो यहाँ मुझे बुझे दूसरी जो जगह टेम्परेचर लो हो जाए है से जगह आउ माने से लो टेम्परेचर रे ऑर्गेनिज्म माने निजको बंचई पारती सेटा को मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच सर्वाइवल इज पॉसिबल इज कॉल्ड मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर है जो सर्वाइवल कंडीशनटा आमर इजी हो जाए पॉसिबल हो जाए मिनिमम टेम्परेचर रे ताको मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर बोली कहा जाए तब तक ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन द रेंज ऑफ टेम्परेचर एट व्हिच द फिजियोलॉजिकल इफेक्टिव ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट आर आर एट द मैक्सिमम जो जगह मैक्सिमम टेम्परेचर निज को बंचई पारती एनिमल्स माने ताको कहा जाए ऑप्टिमम टेम्परेचर तापर देख आउ गोटे यहाँ को मतलब नोट बनाओ एटा केते ऑप्टिमम टेम्परेचर केते रहबो सेटा देइछि से हला ता देखो मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर कोन द हाईएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच द ऑर्गेनिज्म कैन आइडेंटिफाइडली इज कॉल्ड मैक्सिमम इफेक्टिव टेम्परेचर जहाँ कि 40 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जाई पारे जोटी कि माने मैक्सिमम टेम्परेचर रे गोटे एनिमल्स माने निजको खाप खोई चली पारंती तब देखो द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच सर्वाइवल इज पॉसिबल इज मिनिमम सर्वाइवल टेम्परेचर तो ये तुमको कही मु एन ऑर्गेनिज्म गोज इनटू हीट कोमा इज इफ द टेम्परेचर इज एबव मैक्सिमम जदि एबव मैक्सिमम को चलीगला ताले गोटे ऑर्गेनिज्म कौन जाए कोमा को जाए चली जाए ताको कह जाए हीट कोमा है तापर हाइपोथर्मिक माने कौन व्हेन द बॉडी इज टू कोल्ड जो बहुत थर्मिया हाइपोथर्मिया है हाइपोथर्मिया वार्डटा तुम आगु भी शुणी थो हाइपोथर्मिया माने कौन जिते आम बॉडीर टेम्परेचरटा कौन जाए सडन कमी जाए आम ठंडा हो जाओ है इट्स सेड टू अकर्स व्हेन द कोर बॉडी टेम्परेचर ऑफ एन इंडिविजुअल हैज ड्रॉप बिलो 35 डिग्री सेल्सियस है ताको कह हाइपोथर्मिया तापर माइल्ड 35 to 32 डिग्री सेल्सियस कौन जो सिभरिंग
ତାପରେ ଦେଖ ଭାସ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ତାପରେ লিভর ଫେଲର, ଏଗୁଡ଼ା କଣ୍ଡିସନରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମ 35 ରୁ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଫଲ୍ କରିଯାଏ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା। ତାପରେ ମଡରେଟ୍ରେ ଦେଖ 32 ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି କେତେବେଳେ ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସିଭରିଂ ହେଇଥାଏ ବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଭାସ କନଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମସଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ କ୍ରାମ୍ପ କରିଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖ ସିଭର ଯେଉଁଟା 28 ରୁ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଭର କଣ୍ଡିସନ୍। ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେର୍ ୟୋର ବଡି କୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ରାପିଡଲି ଗିଭ୍ ଅପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବଡ଼ିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଉ, ମାନେ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଯାଏ ସିଭର କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା। ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଫଲ୍ ହେଇଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଭର କେସ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖିଲ ଟେମ୍ପରେଚର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ଫଲ୍ କଲା ତାହେଲେ ଆମ ବଡି କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ। ତାও দেখো however as with most thing of human biology there is a wide scope of variation between the individual ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ହାଇପରଥର୍ମିଆ, ଏବେ ଦେଖ ହାଇପରଥର୍ମିଆ କ'ଣ, when the body ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ହାଇପୋଥର୍ମିଆ ତ ତୁମେ ଜାଣିଲ, ହାଇପରଥର୍ମିଆ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରଟା ହଟ୍ ହେଇଯାଏ ବା ବଢ଼ିଯାଏ ହେଲା। ତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ କେତେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି 37.5 ରୁ 38.3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନର୍ମାଲ କଣ୍ଡିସନ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏବଭ୍ ଯଦି 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍କୁ ଚାଲିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଏନଜାଇମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ, ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଇପରଥର୍ମିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ହୋମିଓଥର୍ମି କ'ଣ, ହୋମୋଥର୍ମି କ'ଣ। देखो thermoregulation that maintain a suitable internal body temperature regardless of external influence. This internal body temperature is often though not necessarily higher than the immediate environment. তাহলে poikilothermic କ'ଣ, poikilothermic ହେଉଛି ଦେଖ the quantity of having a body temperature that varies or fluctuate depending on the temperature of the environment, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି cold bloodedness ହେଲା। ତାହେଲେ a poikilothermic is a animal whose internal temperature varies considerably. It is the opposite of the homeothermic, এটা হচ্ছে homeothermic opposite ହେଲା। An animal which maintain thermal homeostatic while the temperature is principle can apply to all organisms. It is generally only applied to the animals and mostly vertebrate. ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏନିମାଲ୍ସ ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇଲା, ଯେମିତିକି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଟାବଲିଜିମ୍, ଏଇଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ସବୁ ହେଲା। ରିପ୍ରଡକ୍ସନରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ କଲା, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ସ ରେସିଓ, ଗ୍ରୋଥ, କ୍ରସିଂ ଓଭର, ସର୍ଭାଇଭାଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଇଫେକ୍ଟ କରେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ବେସିକାଲି ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର, ତାପରେ ଦେଖ ସିଷ୍ଟ ହଉ, ସିଡ୍ ହଉ, ତାପରେ ରିମୁଭାଲ ଅଫ୍ ୱାଟର ଫ୍ରମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ହେଇଥାଉ, ଡର୍ମାନ୍ସି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍, ହାଇବର୍ନେସନ୍, ହାଇବର୍ନେସନ୍ ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ହିବର୍ନେସନ୍ କ'ଣ, ଏଷ୍ଟିଭେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ। ତାପରେ ହୋମିଓଥର୍ମି କ'ଣ, ଥର୍ମାଲ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ବି ତୁମେ ଜାଣିଲ। এটা হচ্ছে হাইবরনেশন আর এস্টিভেশনর তুমি যদি জানবা পাই চাহুছ তাহলে এই নোটটাকে তুমি লিখিপার। দ এনিমাল গোজ ইনটু দ ভেরি ডিপ স্লিপ ହେଲା এন্ড হ্ୱାইল ইট ইজ আসলিপ ଦ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟ ତାଙ୍କ ମେଟାବୋଲିକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏନି ମାମାଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିମେନ୍ ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ମେନି ୱିକ୍ସ ହେଲା, ସେମାନେ ଇନଏକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି with a body temperature lower than the normal temperature ହେଲା, ତାକୁ ଯେ ହିବର୍ନେସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଦ atmosphere of the earth sustain life ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଥିରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ହଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଥର, ସେଟା ଆମ ଲାଇଫ୍ର ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିକୁ ସେ ରଖିଥାଏ, ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏନିମାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ରିଏଚର ବ୍ରିଥ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅର୍
filter it from water, and plant grows because of the presence of carbon dioxide. Living thing combining oxygen and carbon to make carbohydrate, chemical that provide energy and are important part of DNA, protein and the other organic materials ହେଲା। ସେମିତି ଦ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ 4 ଲେୟାର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଓଜୋନୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଗୋଟେ ମେସୋସ୍ଫିୟର। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ତ ତମେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଜାଣିଲ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଉ ଲାଇଟ୍ର ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଏନିମାଲ୍ସ ଉପରେ ତମେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିଲ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। ଆଉ ୟା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଛି, କୋର୍ ପେପର 1ର କୋର୍ ପେପର 2ର ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 1ଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା। ତ କୋର୍ ପେପର 1ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ 1 ସାରିଛି, ଆଉ ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ଆମର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଥିଲା। ତ ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ମୁଁ ଆଗ ସାରିଦେବି, ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୋର୍ ପେପର 2ର ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2ଟା ବି ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୟା ସହିତ ସରିଯିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଟା ତୁମର ଲାଷ୍ଟରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଆର ମାସରେ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିଲି ଯେ ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଏବେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାସେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଡ଼ନ୍ ମୁଁ କାଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ନା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମର ଆର ମାସରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା କୋର୍ସ ସାରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା କୋର୍ସ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।